करते हैं, जब बच्चे ऐसे करते हैं उसको दिखाने के लिए। ठीक है, वो टेक्स्ट है ही उल्टा सीधा, वो टेक्स्ट है ही उल्टा सीधा, क्योंकि वो दिखाया ये जा रहा है कि
Jai Hind, welcome everyone. Thank you for joining us for April webinar series on inclusive education. हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप सब वापस टीचर ऐप के वेबिनार सीरीज में आज मौजूद है. The Teacher App by Bharti Foundation is a platform designed to empower teachers, school leaders, and educationists with high quality content and engaging resources. We believe that happy and energized schools, along with engaged teachers, students, and parents, are crucial for school transformation. We promise you an amazing experience with our quality resources, engaging learning bites, webinars, and other important materials. I'm Deboshri, and I am your host for today. Along with me, my colleague Vijay and Deepak will also be available throughout the session for all technical support. As we gather here in April, it is important to recognize the significance of this month as a time dedicated to inclusive education. April एक ऐसा महीना है जो हमें याद दिलाता है to promote the importance of promoting diversity, equity, and inclusion in our education system. It is a month to celebrate and raise awareness about the rights of all learners, regardless of their backgrounds, abilities, and differences. Before we begin, I want to give you some very general information. इस वेबिनार को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम पोल्स एंड चैट्स का इस्तेमाल करेंगे. आप प्लीज उसमें समान भागीदारी से भाग लीजिएगा. We also encourage you to ask as many questions in the chat box. हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमारा जो पूरा वेबिनार है वो आपकी उम्मीदों के हिसाब से चल रहा है या नहीं. वेबिनार सीरीज है 24, 25, 26. हम उसका साथ में रिकॉर्डिंग टीचर ऐप पे अवेलेबल करेंगे, जिसके बाद एक छोटा सा असेसमेंट है. आप उस असेसमेंट को लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध किया जाएगा. So you don't actually have to wait for us for reminder. This all recording would be uploaded on the teacher app. आप इसके बाद एक assessment ले सकते हैं और उसके बाद आपको certificates वहीं से मिल जाएंगे. Now let's dive into today's webinar. It's a pleasure to have it's a pleasure for the teacher app to collaborate with Changing Foundation for this important theme. We are honored to have Ms. Nupur Jhunjhunwala, the founder of Changing Foundation, conducting the session herself. Nupur Jhunjhunwala is a leader in global development with expertise in diverse fields. With a background spanning 2 decades, she has influenced national and global goals, focusing on women empowerment, education, digital inclusion, and more. Committed to inclusivity, she founded Changing Foundation to advocate for individuals with learning disabilities, drawing from personal experience with neurodiverse family members. Without further ado, I hand over this digital space to you, Nupur. Welcome. Thank you so much, Debashri. It's a pleasure to be here. Let me share my screen. Nupur, you're mute, I guess. Yeah. Can you hear me now? Can you all hear me? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Can you hear me now? आप एक बार चेक कर सकते हैं नुपुर, शायद कुछ टेक्निकल आप Can you hear me now? Okay, you are audible. We can, okay, the others can hear you, Nupur. It could be an issue with my system. Please go ahead. Yeah. Okay, just give me 1 second. Is my screen visible? So welcome everybody. आज हम बात करेंगे कि हम हमारे क्लास में डाइवर्स लर्नर्स के साथ कैसे
काम कर सकते हैं, और इंक्लूसिव क्लासरूम्स जब बनाते हैं, हाउ डज दैट हेल्प अस improve learning outcomes for everyone? As you see in the picture, there's a big difference between equality, which is what we all talk about, versus equity. Equality is giving everybody the same opportunity. Equity is ensuring that they can access that opportunity. तो हम एक चीज कहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन इज इक्वालिटी। पर क्या हर बच्चा जो स्कूल अटेंड करता है पढ़ पाता है? इज ही लर्निंग, इज शी लर्निंग, आर दे ग्रोइंग, आर दे थिंकिंग? दैट्स द डिफरेंस। एंड आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट देर इज डाइवर्सिटी इन योर क्लासरूम ऑन डिफरेंट लेवल्स, socio-economic and gender, we all know, right? It's any teacher who teaches in any school knows that हर कम्युनिटी से बच्चा स्कूल में आता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी होते हैं, एंड लड़की और लड़के में पढ़ाई करने में फर्क भी होता है। दूसरी बात है डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, हर बच्चा सेम लेवल पे नहीं है, दिस ऑल्सो वी नो, इट्स नॉट न्यूज। देन लर्न द अदर टू दैट वी ऑफन overlook is, one is ability, एंड एबिलिटी में ये चक्कर होता है कि हमें जो फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, जो बच्चा देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जिनके हाथ नहीं होंगे, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, दैट दे मैनेज टू डू प्रॉपरली, एंड हम डायग्नोज करते हैं। बट व्हाट अबाउट चिल्ड्रन हु लुक लाइक यू एंड मी नॉर्मल, बट दे हैव एन इनविजिबल डिसेबिलिटी? तो ये एक और चीज है जो ऑफन अनडायग्नोज होती है, विच वी कॉल एन अम्ब्रेला ऑफ न्यूरोडाइवर्स कंडीशंस। ये हम आप थोड़ी देर में और बात करेंगे। एंड दूसरा है लर्निंग स्टाइल्स। हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, सिंपल चीज थी, बैठो, पीठ सीधी रखो, पेन उठाओ या पेंसिल लो, बुक में लिखो, सामने देखो, हिलना डुलना बिल्कुल मत। एनी चाइल्ड दैट मूव, rocked, moved their legs, fidgeted, they were all very restless children, and इनको बहुत पिटाई होती थी। तो there are different ways that children learn. क्लासरूम में हम often, especially senior classrooms में, एक स्टाइल यूज करते हैं, which is verbal, based on listening. टीचर बोलती है, बच्चा सुनता है, टीचर बोलती है, बच्चा सुनता है, टीचर बोलती है, बच्चा सोता है। तो we will talk a little bit more about that. तो ये डिफरेंट लेवल्स बच्चों के लिए क्यों होते हैं? एक तो लर्निंग लॉस है, इट कुड बी अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स और सम सब्जेक्ट्स। ये क्यों हो सकता है? कोविड वाज वन रीजन कि आपका डिसकंटिन्यू हो गया, बच्चे घर पे पढ़ नहीं रहे थे, तो वी हैड लर्निंग लॉस। इट्स बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ लर्निंग लॉस। बट अब 2 साल हो गए, एवरीबडी शुड बी बैक टू स्कूल। छुट्टियां, बीमारी, टीचर मिसिंग है, तो ये सब चीजों से लर्निंग लॉस हो सकता है। बट देर इज ऑल्सो रीजन ऑफ अनडायग्नोस्ड डिसेबिलिटी, दैट्स वन। एंड आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? पहले समझिए कि बच्चा किस लेवल पर समझता है, फिर उस बच्चे को ये तरीके से पढ़ाइए कि वो कैसे पढ़ता है। और तीसरा, रिमीडियल इंटरवेंशन, कि समझो एक बच्चा गणित में या मैथ्स में बहुत अच्छा है, बट इंग्लिश या लैंग्वेज में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो you have to focus only on the language वैसे। एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज आइडेंटिफिकेशन, कि ये बच्चों को कहीं डिसेबिलिटी तो नहीं है, स्पेशली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आप ये फोटो देखें, इसमें से आप बता सकते हैं कौन से बच्चे को डिसेबिलिटी हो सकती है, एक इनविजिबल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी? आप अपने चैट बॉक्स में ये आंसर डाल सकते हैं। कैन यू प्लीज टाइप कि आप लोगों को फोटो में कौन से बच्चों का लग रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है? You can put things like the child in the front, leaning on the desk. Okay. Right side, last boy. Okay. Child who looks on the side. Yes. Anyone. Soumya Khanji. Yes. First line, second. So basically आपको लग रहा है कि जो बच्चा अटेंशन पे नहीं कर रहा, वो शायद वही बच्चा होगा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। बट सौम्या जी ने सही कहा आंसर, कि कोई भी हो सकता है इसमें से। ये भी बच्चा हो सकता है भी बहुत कंसंट्रेट कर रहा है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है।
बट वो टीचर के लिए मेहनत करके सीख रहा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट मोर. कितने लोग जानते हैं, आप लोग के क्लास में एक बच्चे को कहा है तुम डफर हो, स्लो हो क्या, मंदबुद्धि हो, इतने आलसी हो, कभी काम टाइम से नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, हमेशा पढ़ाई में लगा, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता, यू आर फॉरगेटफुल, हमेशा हर चीज भूल जाते हो, कैसे होगा तुम्हारा. और लापरवाह, डिसऑर्गेनाइज, ऑलवेज डिसइंटरेस्टेड, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता. नेवर डिस्ट्रैक्ट, नेवर पेइंग अटेंशन इन क्लास, डिस्ट्रैक्टेड, केयरलेस. Are these familiar to you for any of the students that you all know? क्या आप लोग ने ये टाइप ऑफ वर्ड सुने हैं किसी बच्चे के लिए? डफर, स्लो, आलसी. इज दिस कॉमन? दिस इज अ चाइल्ड दैट वी ऑफन थिंक कितना पोटेंशियल है, बट क्या करें, इसके पेरेंट्स ही ऐसे हैं, इनके पेरेंट्स पर लेबर क्लास हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कैसे होगा. इनके घर में इतना झगड़ा होता है, कैसे बच्चा पढ़ेगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड होगा. या थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, क्लास का टॉपर बन सकता है, बट ये बच्चा, this is often what an invisible disability may look like in the classroom. So let's understand कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो SLDs या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज फर्स्ट टाइम राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट ने 2016 में रिकॉग्नाइज किया था. ये 3-4 कंडीशंस होती हैं that affect a person's ability to process language that could be spoken. तो जो मैं कह रही हूं आपको शायद समझ में नहीं आया, or written, but it impacts the ability to comprehend what is being told, to speak and communicate, to read, to write and spell, or do mathematical calculations. These include perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia, and developmental aphasia. We will get into this in just a minute. ये disabilities, unlike physical disability, ये 3rd ग्रेड के बाद या बच्चा 8 साल का होता है तभी डायग्नोस हो सकती है. Now it's important to remember कि हम यहाँ पर भले मानुस होकर नहीं आए हैं कि हमारा दिल जिगरा बहुत बड़ा है इसीलिए हम बोल रहे हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे. It is not that. It is a legal mandate. The Right of Persons with Disability Act says that a system of education where students with and without disabilities must learn together. A system where teaching and learning is suitably adapted to meet learning needs of different types of students with disability. This means कि अगर एक बच्चे को disability है, आप as a teacher have to be able to teach them in the classroom based on their needs. ये नहीं हो सकता कि ये बच्चे को आप क्लास के बाहर रखकर स्कूल में अटेंडेंस दिला दें और वो पढ़ाई नहीं कर रहा, या फिर ये भी नहीं हो सकता कि ये बच्चा स्कूल में क्लासरूम के बाहर किसी और के साथ पढ़ रहा है. इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें भी पुश है कि सिर्फ फाउंडेशनल प्राइमरी स्कूल में नहीं, फाउंडेशन टू हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक की जरूरत है ये. वी हैव टू हैव इंक्लूसिव क्लासरूम्स, वी शुड प्रोवाइड देम द टेक्नोलॉजी नीडेड. एंड हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी कई बार एक्सपेंसिव है, बट एक फोन, एक कैलकुलेटर, दीज आर ऑल्सो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज टू बी यूज. पर हम जो भी कर लें, जब तक हमारा स्कूल का कल्चर, टीचर्स की एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रिंसिपल्स का कमिटमेंट और बच्चों का साथ नहीं हो, वी विल नॉट अचीव ट्रू इंक्लूजन. एंड ये बातें बहुत जरूरी होती है. अगले 3 दिन में हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे. तो SLDs क्या है, व्हाट इज न्यूरो डाइवर्सिटी, ये सब बड़ा टेक्निकल पता नहीं क्या है. द पॉइंट इज कि हमें लगता है कि हर इंसान का ब्रेन एक जैसा होता है. इट्स ऑल वायर्ड द सेम वे. देयर इज एन एवरेज. जो बच्चा इससे एवरेज से बिलो होता है, परफॉर्म नहीं होता है, वो लो IQ या मंद बुद्धि का होता है. दिस इज नॉट ट्रू. द ब्रेन कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स, is connected through neurological pathways to different
parts of the brain that impact language, math calculation, cognitive ability, executive function. So in this, people with SLDs have a deficit or their brain is wired differently. उनका IQ ठीक होता है, ठीक है? And it's more common than we realize. It's 1 in 5. ये सोचिए कि आपके हर 5 बच्चे में से एक बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी. तो जो बच्चों को आप डफर, डिस्ट्रैक्टेड, केयरलेस समझ रहे थे, शायद उनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है. If we look at this as an average in India, it is at the minimum, even at 15%, 35 million children in India. ये प्रॉब्लम सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स के साथ नहीं हो सकती. आप ये सोचिए कि अगर 20% बच्चे, 20% of children are not being taught and diagnosed, ये हमारी कम्युनिटी में कितना प्रॉब्लम हो सकता है. मैं अभी एक वीडियो प्ले करूंगी. The refrain was उसको आता सब कुछ है, ये पता नहीं एग्जाम में क्या करता है. Because when it came to spelling, my grammar was all over the place, and for whatever reasons, I'm not blaming the teachers. It maybe they themselves were clueless. The awareness about the dyslexia was not there, and therefore, when it came to the written exams, I was very poor. I was very good at maths. My science was good, but if everything had to be judged by the written words, then that used to fail me. And for me, then I never looked, but I was very good at maths. I gave my JEE twice. I cleared both the times. I wanted to do physics. I came and did physics. And again, the thing is that JEE again is a paper which does not judge you on your on your written skill. It's basically your logic and the maths. So there I've excelled. I was lucky enough to work for InfoEdge Group, which was a startup. And these places, I mean, the thing is, if you're good, it's pure meritocracy. So if you're good, you keep getting the opportunities. तो अब ये सुनिए, एक लड़का जो स्कूल में डफर था, जिसको स्पेलिंग्स नहीं आ रही थी, वो आईआईटी कानपुर में फिजिक्स में मास्टर्स कर कर ग्रेजुएट हुआ है. आईआईटी कानपुर उनके जमाने में टॉप यूनिवर्सिटी होती थी फॉर फिजिक्स. एंड आज वो एक एंजल इन्वेस्टर है जो लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. ये बच्चा क्लास का डफर था, बट ये बच्चा जो आज एक सक्सेसफुल एडल्ट है, इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी. Can I get one volunteer, please? Yeah, I would request somebody from the teachers if they can raise their hand, and we'll do a very exciting activity. Yeah, yeah. So बहुत teachers ने hand raise किया है. We'll give this opportunity to Sangamitra Singh, as she has raised her hand first. And Sangamitra, we are just promoting you to panelist, and yeah, आप कर सकते हैं. So yeah, over to you, Nupur. Yeah, thank you, teachers. हमें आगे आने वाले time पे और activities है. We'll definitely kind of include all teachers in this. So you will have 60 seconds. ठीक है, आपके पास 60 seconds है. मैं आपको टाइम कर रही हूँ to read what I am going to put on the screen now. Your time starts now. Let me try. We begin our tribe at a familiar blaze, a dobby like yours, and tea. I can't read this word. Tea contains a संगमित्रा जी, आप पक्का 100 टीचर हो? trillion sets. Come on, you can Yeah, do yeah. it. Come on, I your am time trying to is read up. this word. Yes. Okay, so tie contains 100 trillion sets that mark together. Okay, guy. Oh. I can't.
within each one of you Attention, these. थोड़ा सा फोकस करो. Okay, इतनी सिंपल अंग्रेजी है. okay. Okay, time's up. You see how The difficult it words was, are so Sanmitra ji. mixed I up here. apologize for pestering you, but it's very, very difficult. I am now going to, Yeah. if you are sport, please read this. You Yeah, have this is 30 so seconds. easy. We begin our trip at a familiar place. A body like yours and mine contains 100 trillion cells that work together by design. And within each one of these many cells, each one that has DNA, the DNA code is exactly the same. 1 second, I have to, the captions are coming. Each cell is identical, a remarkable but valid claim. This means that the cells are nearly alike but not exactly the same. Take, for instance, the cells of the intestines, that they are vital is certainly plain. Now think about the way you should think of those cells were the cells in your brain. Now, Yeah. congratulations. So, do you know how long you took to do that? 45 seconds. And Yeah. if you will believe it, this text and this text is identical. It's the same. It's just maybe the words or the letters are not written properly. It's flipped. It's not written properly. This is what you and me see. This is what a child with a learning disability sees. They flip or often mirror the text on Yeah. the screen. So you see how begin has the B has become a P because it has flipped like this. Yeah. And G has become the number 9. Yeah. And imagine that you do it once, two, thrice, and now suddenly it's all garbage. Now think about a child who's reading a textbook and you all are reading it out or expecting to listen to somebody or her to listen to somebody in the classroom. And they're seeing this. Can you and me concentrate on this? No, it's very, very, very challenging. So this is one example of how it happens. So what dyslexia does is it struggles with language. Thank you, Sanmitra ji, for volunteering. Thank you so much. It's about 80% of all learning disabilities in the population. One way is this flipping. For a lot of children, it also leads to movement. So, Jesse, here, can you see all the dancing? The letters are all dancing. They will see dancing. You can see waves. They may see suddenly things missing. They may see inside out. This is almost like a print. तो आप लोग ने तारे ज़मीं पे देखी होगी, वो बच्चा दिखाता है कि वो उसके मंडरा रहे हैं लेटर्स. That is one way that a child sees. The other is dyscalculia. Dyscalculia starts with math and concepts, mathematical concepts. It's about 5%. Now, very, very important to understand that person with dyscalculia is not 99% of Indian population who hates maths. Very different. On the paper, you will see, for example, बीच में मैंने highlight करा है 4 plus 5 equals 6. Actually, the child has written 9, but वो flip हो गया. 4 into 2 equals 8. 4 is flipped. 5 into 6 is equal to 65. The child has flipped the letters and numbers and put it together. So बच्चा को concept नहीं समझ में आ रहा है. This also translates into quantitative things that we need to do as adults or individuals. Concept of time. 5 मिनट में एक टास्क खत्म करके दो. ये आपको अगले हफ्ते मुझे कंप्लीट कर देना है. Stand 1 foot away from the student. These are all concepts of quantity and maths which individuals struggle with. Then, this is not a doctor's handwriting. This is a child who has dysgraphia. They struggle with writing or fine motor skills. तो आपको क्लासरूम में दिखेगा कि ये बच्चा आइदर इसके नोट्स इनकम्प्लीट होंगे, बहुत धीरे लिखता है, अनटाइडीली लिखता है, राइट, लिखता ही नहीं है, कंप्लेन्स ऑफ हैंड.
This is a child who may not be buttoning their shirts, belt नहीं बांध सकता, shoelaces नहीं होंगे. So fine motor skills get impacted. Ab I have a question for you. How many steps does it take if I were to tell you, you have a paper and pencil and I say, write the word cat. Chatbot में डालिए, आपको क्या लगता है कितने words होंगे? कितने steps आपको लेने हैं इसके लिए? Chat में डाल दीजिए, not a trick question. I have given you the dictation cat. आपके पास paper pen है. How many steps will you take to write it down? 3, 6 to 10, 3, 3, 4. So most common now, you hear cat, and you write it. But it's actually it's about 7 steps. So why is it 7 steps? I hear the word cat. Then I break it up into ka actor. Then I have to diagnose what ka is. Is it the ka C? Is it the ka K? Ah, 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 E, ah, A, eh. So that. Then I have to remember what it looks like. Does the C look like this? Does it look like this? Is it capital? Is it small? Then I have to send the instruction to my brain, from my brain to my hand. Step 5 ho gaya. Then I have to remember to put it back together, right? So I have to now recode it when I have to write it, and then finally I write it. So it's 6 steps. अब ये जो 6 steps है ना, इसमें गड़बड़ घोटाला हो जाता है. बेसिकली यहाँ वायरिंग में ऑफन कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज इनके ब्रेन की वर्किंग मेमोरी में एंड वायरिंग में दे आर नॉट एबल टू फॉलो, which is why they write slower. Now let's play a game. I need one more volunteer, and I promise I won't be mean like I was to Sangmitra ji. Can we get one more volunteer, please? मैं निघत नजीर मैम को प्रमोट कर रही हूँ. निघत नजीर मैम, आपको मैं पैनलिस्ट प्रमोट कर रही हूँ. आप प्लीज एक्सेप्ट कर सकते हैं. निघत नजीर मैम. Okay, yeah. See that? Yeah, she's there. Okay, so let's play this game. You have 10 seconds. You have to read out the color, not the words. Again, color, not the words. Go. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को. Yes, ma'am. या निघत मैम, अब आवाज आ रही है आपकी. Yes, ma'am. Ma'am, exactly what I have to do? आप 1 में कलर देख, कलर नॉट वर्ड्स, पढ़िए ऑर्डर में 1 2 3 4 के ऊपर. Blue, यस, नेक्स्ट. red, 2 yellow. क्या है? येलो, नो. Is Number means, 4. yellow. Okay, number 5. Is brown. Number 6. Is black. Number 7. Purple. Number 7. Number 7. Sorry, is red. It's pink. Okay. Number 8. Green. Number 9. Number 9 is pink and number 7 is red. Okay. Difficult? Up, read the word and not the color. 1. Orange, yellow, purple, brown, blue, green, black, purple, yellow. Why was it easier to do this? Ma'am, Because spelling हमारे is ब्रेन already- को हमने ट्रेन किया है कि Ma'am. नो मैटर कौन से कलर, कौन से फॉन्ट, कौन से स्टाइल में लिखा है, आप वर्ड Yes, को ma'am. रिकॉग्नाइज करेंगे. यस और नो? Yes, ma'am. Actually, when you are neurodiverse with a learning disability, things like color, Mhm. things like font size, they make a big difference.
बिकॉज अब ये बच्चे ये सारी चीजें ब्रेक करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो इट गोज अगेंस्ट आवर ग्रेन, समथिंग दैट इज शुड हैव बीन good to do because it was forcing you to think in a different way. Thank you, ma'am. I will move on. Okay, thank you, ma'am. I was a cheater in class, and I'll tell you why. Because in math class, for example, the teacher would put up the sum on the table, and I would work it out in my head and have the answer ready with me. And when she would ask me, or he would ask me to show the working, I wouldn't have it, right? So they always assumed I copied it from my peer sitting next to me, and then the peer said, "No, I got the wrong answer." So this guy's figured it out in some way or form. So, you went through that a few times because our brains just think differently, and we tend to understand what is being said before the other person is finished saying what they're saying. And that becomes very unnerving. I didn't know my ABCDs till the 5th grade, to be very honest. The only reason I could write my name was because there was another Kunal in my class. He wrote it, I memorized it, and I simply copied it. It was as simple as that. In the younger classes, I would sit at the back. So by the time the class finished reading the chapter twice, I had memorized it. So I would just pick up on where the person dropped off and recite from my memory. My sister started a computer class in the 8th grade, and I was in the 5th. And I got intrigued by the fact that she was typing something on this electronic device, and it was doing something magical on the screen. And I picked up on that, and I started sort of spending my breaks in the computer lab, bugging the teachers and the assistants to teach me what they were doing. By the time I hit my 7th grade, I was actually doing 10th grade level programming and college school projects, and that's what became my go-to thing as an out for my lack of success in academia. And the school encouraged it, my friends encouraged it, and that's when I decided right on my 8th grade to get a full-time job. कोई विश्वास कर सकता है कि जो बच्चा could not read and spell till grade 5 आज वर्ल्ड के टॉप एग्जीक्यूटिव एमबीए ट्रियम प्रोग्राम से उसने एमबीए भी किया है. He runs a fintech company across 5 countries, over 500 people employed, and breaking all sorts of barriers. A child with a learning disability, right? अब ये वीडियो देखिए कि हमें हमेशा लगता है कि एक बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है एंड अच्छा ये हो सकता है. बट नाउ थिंक अबाउट अ चाइल्ड हु मे हैव हैड दिस चैलेंज कि और भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं ये बच्चे में. Vijay is sleeping in his bedroom with a blanket on him. Sunlight is seeping in through the windows and he is almost awake. Morning, Vijay! Wake up! Time to get ready for school! Like most days, Vijay shows extreme disinterest in waking up and getting ready for school. Vijay, get up! You'll be late for school! Vijay grips his blanket tightly and yells at his mother. I have a headache, Mom. I don't want to go to school today. It's always such a struggle to send you to school. Vijay, get up right now. I'm fed up with your constant headaches and stomach aches. Stop making excuses. In the previous test, Vijay's friends are completing their tests quickly. Today, Sita Miss would conduct the test. If only I can write the answers like my friends, I would be happy to go to school. He attempts to answer the question he was familiar with, but was unable to spell the words he was attempting to write. Time up. Miss Sita is near Vijay's desk. She grabs his incomplete paper and looks at him in anger. Vijay looks terrified, almost close to tears, and closes his eyes. Vijay opens his eyes, finds himself in the bedroom, pulls the blanket over himself and pretends to sleep again. Does your child hate school?
मुझे बताइए ये बच्चों के लिए इज दिस अ familiar thing? If it is, just type yes on your chat box, in your chat. Have you seen kids like this? जिनके पेट में सर दर्द होता है, बुखार आता है. Now what are you thinking? This is a child who's not prepared. ना पढ़ाई नहीं की होगी, बदमाशी करता रहता है पूरे टाइम खेलने को चाहिए, पढ़ाई नहीं कर रहा है इसीलिए. करेक्ट. बट नाउ थिंक अबाउट दिस. अब आपने ये देख लिया एकेडमिकली, आपको लोग को समझ में आ गया कि ये बच्चे का ये होता है. ये ऑल्सो शोन यू हाउ फाइन मोटर स्किल्स में ये बच्चा आपको लगता है अनटाइडी, केयरलेस, धीरे धीरे बराबर कैजुअली काम कर रहा है, बटन नहीं लगाता है, बेल्ट नहीं लगाता है, शू लेसेस अनटाइड होते हैं, नोटबुक्स का कभी पता नहीं रहता है, एग्जाम में कभी खत्म नहीं करता है, ऑल ऑफ दैट. नाउ यू आर हियरिंग द थर्ड लेवल. This is a child who has a gap in oral or written performance and the written. Class may ask the most difficult questions. Madam, slime वो क्या बोलते हैं, slime जो बच्चे खेलते हैं, या toothpaste, solid है कि liquid? But madam, ma'am बताइए कि how do we know that the moon goes around the sun or the sun goes around the moon, or the earth goes around the moon or the moon goes around the earth? What is the proof? They are asking you conceptual questions, but when you ask them basics in exams, they're not able to write. They ask you logical questions. So you often get irritated कि जो basic है वो तो समझना नहीं आता है, बाकी सब बोलता है. This is a child who's often very frustrated, angry, bad behavior, or has extreme anxiety, very poor self-esteem, दोस्त नहीं है, memory challenges, constantly forgetting things, forgetting deadlines, forgetting things. You're asking them to do 3-4 things, not able to remember. They also process information very, very slowly. So incomplete notebooks, incomplete exams, incomplete tests. They struggle with planning, right? Always late. Don't understand time. Why don't they understand time? Remember I said dyscalculia, quantitative. So they don't know how much time they cannot judge. जैसे हम लोग, अगर आज मैं आपको बोलती हूँ एक चैप्टर पढ़ना है, आप लोग क्या सोचोगे, एक चैप्टर है, चेक करोगे कितने पेजेस है, कितना फॉन्ट साइज है, अच्छा मुझे 1 घंटा लगेगा शायद पढ़ने में, मेरे को शायद 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टास्क. These people are not able to understand that concept कि कितना टाइम लगेगा, right? Why? And then it gets worse because आप जब होमवर्क दोगे या आप एग्जाम देते, आपको पता है कि ये 3 घंटे में लगेगा. But now think, remember the 6 steps and they were struggling with those as a simple task as writing the word cat? Their processing is slower. Why is their processing slower? Because they're sensitive to overstimulation. आप जब हम लोग वेबिनार में हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर फोन पे मैसेज देख रहे हैं, आपके सामने कोई और बैठा होगा तो वो हिल रहा है, आपके सामने नोटबुक ये भी हो सकती है, कोई आ रहा है जा रहा है, बाहर से हॉर्न की आवाज आ रही है, पंखा चल रहा है, घड़ी है. There's so many things that are going on, but you and me have learned to tune that off. हम लोग concentrate कर सकते हैं, but इन लोगों को ये सब चीजें, they are constantly hearing and their brain doesn't know how to work through what is important. अब एक बच्चा था, he was in school, he come home with a headache every day and tell his parents कि मैं जब क्लासरूम में बैठता हूँ ना, मुझे लगता है कि गोलियां चल रही हैं. Reasonably good private school in Bombay city, गोलियां चल रही है, अनसेफ थोड़ी है, बॉर्डर पे थोड़ी है स्कूल, पता है. So they took them to an audio processing professional. वहां पता चला कि ये बच्चा जब वो पेज हम लोग टर्न करते हैं ना बुक की, every time the page was turned, the sound was so low, but to him he was hearing it as a bullet. अब ये सोचिए आप कि एक बच्चा है, उसको वैसे भी सब कुछ प्रोसेस करने में स्लो है, वो समझ रहा है सब कुछ, पर आंसर देने में उसको चैलेंज हो रही है, फिर ये सब आवाजें आ रही हैं. क्या उसका सर नहीं दुखेगा? क्या वो नर्वस नहीं होगा? ऊपर से बच्चे बोल रहे हैं, अरे डफर तू तो बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकता, तू क्लास कैसे आया इधर? आप उसके पेरेंट्स को पीटीएम में बुला रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत कर ले, यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट लिटिल बिट मोर. मैडम आई एम टेलिंग यू, ये बच्चा आपका बहुत स्मार्ट है, थोड़ी सी और मेहनत कर ले.
Now do you realize how challenging it is for this child? ये हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं होगा. So, लंबी कहानी छोटी करके, we have to remember that a learning disability impacts 3 aspects of a child. Academics, ye as teachers, we all know and can see. हमको लगता है we may be able to fix this. No. There are different ways to teach them how to do it. Life skills. What is life skills? This is all your executive functioning, cognitive functioning, working memory things. Plan karo. Exam par. There is an exam in 1 month. Syllabus में 6 chapter हैं. उसके लिए कैसे planning करूं? आपको पता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि उनका टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है. They don't know how long it takes to take a bath. मेरी बेटी को लर्निंग डिसेबिलिटी है. मेरा उसके साथ रोज झगड़ा होता था. मम्मी मैंने 5 मिनट में नहाई हूँ, 2 घंटे बाथरूम में रहती थी, घर का पानी खत्म. But I'm telling you, mummy, I went for 5 minutes. Why are you always after my life? Finally, what we did is we created a playlist of songs जो वो बजाती थी. अब जब पहला गाना 3 मिनट का खत्म हुआ, उसको पता है पानी बंद करना है, साबुन लगाना है. फिर 2 मिनट का गाना खत्म हुआ, साबुन लगाकर फिर अपने आप को धोना है. वैसे करके ना हमने प्लेलिस्ट बनाई. तो उसको पता था कि म्यूजिक जब शुरू होता है, गाने जब बदलते हैं, शी इज डन. No fighting, because she still doesn't understand how long she needs to take, but she understands the tasks, planning, and emotional well-being. Always stressed, gets sleepy. अब ये सोचिए, अगर मैंने आपको बोला किसी और लैंग्वेज की किताब को पढ़ो बिना चश्मे के, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली ये बच्चों का, इट्स लाइक जब आपके फोन पे बहुत टैब्स खुले रहते हैं, कंप्यूटर पे हैंग होता है ना, तो the sardard या नींद आना is a way for the brain to say, okay, I'm tired, अब मैं shut down. We see being tired as only a physical thing, but mentally also when you're very tired, you want to sleep. So emotional well-being, depression, anger, fidgetiness, not being able to sleep well or sleeping too much, constantly complaining of being fatigued, not being able to eat too much. Now remember, एक ये बड़ा normal sign है. These people also often forget to recognize symptoms of hunger, of thirst. They can't multitask. आप लोग उनको क्लासरूम में बोलते हैं लंच टाइम हो गया, पीरियड लंच टाइम का है, सब लोग प्लेग्राउंड में गए खाना खाने, टिफिन. बच्चे खेल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं. ये बच्चे का खाना कभी खत्म ही नहीं होता. टिफिन इनकम्प्लीट होता है, लंच टाइम खत्म हो गया. Why? They're seeing children play, they're hearing people talk, and they're expected to eat. Multitasking cannot do. So these are 3 aspects that we want to keep in mind. Yet, I want to reinforce this, that dyslexic thinking or thinking of people with learning disabilities drives us all forward. Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Henry Ford, ये सारे इन्वेंशंस जो थे, जिनके बिना आज आप और मैं नहीं रह सकते, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, गाड़ी, लाइट, ये सब इन्वेंशंस है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की. जो बच्चा पढ़ नहीं सकता वो ये करता है. आर इमेजिनेशन, मिकी माउस के कितने फैंस हैं, है ना हम लोग के बीच में? Cannot be an author. Agatha Christie, one of the world's greatest authors. Robin Williams, one of the best artists. They all had learning disabilities. It generates employment. These are all companies that were founded by people with learning disabilities. 2021 में अगर आपसे the top 10 companies founded by learning disabilities अगर लो, they contributed $1 trillion. $1 trillion to the global economy. ये आपके डफर हैं. हम लोग बोलते हैं ना सारे जीनियस स्कूल से ड्रॉप आउट होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं. It's because most of them have a learning disability. There's an informal statistic which says 25% of all global CEOs have a learning disability. And then of course,
It drives productivity companies around the world. So how does this happen, yaar? How is it कि बच्चा क्लास में फेल हो रहा है but ये दुनिया बदल रहा है? मतलब doesn't sound normal. Probably isn't. But there is something called dyslexic thinking, which is the same wiring of the brain which prevents basic abilities actually enables higher order thinking, visualizing, innovation, problem solving, communication, logical reasoning, connecting the dots, big picture thinking, right? Detail में नहीं जाते हैं, पूरा बात समझ में आओ. This is why globally the percentage of students with learning disabilities in the fields such as engineering, arts, and entrepreneurship is twice the percentage of average individuals in the general population. I want to stop here for a second. Can you imagine कि हमारे class में 20% of the children are struggling? Currently, we believe they are the duffer of the classroom who are careless with potential. They could be the next big entrepreneur. They could be the biggest scientist. But हमारे school से वो pass नहीं हो पा रहे. Because we are concentrating on this. We are concentrating on just the struggles. But जब बच्चा ये higher order thinking आपको display करता है, आप बोलते हैं पहले basics करो, फिर आगे बात करेंगे. एग्जाम में तो ठंठन गोपाल ऐसे आकर तो बड़े क्वेश्चंस पूछता है. And that's where the conflict happens. Globally, दुनिया के top universities, MIT हो, Yale हो, Brown हो, Stanford हो, या इंडिया में IIM Bangalore हो, Ashoka University हो, they all are attracting students with learning disabilities. So much so कि MIT में ये इतना common है कि it's known as the MIT disease. तो हम इनको कैसे support कर सकते हैं? There are 3 pillars of creating inclusive schools. The first is sensitization, identification, inclusive teaching strategies, and enabling support systems. So how do you identify? I've already mentioned this. 1 out of 5 our students have a learning disability. Only 1 out of 20 get diagnosed. Do you think this is right? Can you all just put in your chat? Do you believe that this could be true now that you've heard? क्या आपको लगता है आपके क्लास में ये बच्चे हैं जो आप लोग ने डायग्नोस नहीं करे अभी तक? Right? So it's more common than we think. So whose capacity should we build? अच्छा ठीक है, इनको डॉक्टर से डायग्नोस करा देंगे, फिर क्या करेंगे ना, वो स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे. मेरे को नहीं करना ये सब टेंशन, मतलब ये सब बच्चे को मैं नहीं मैनेज कर सकती. No, we have to all work together. Teachers, master trainers, administrators, school का parent and students, सबको sensitize करके उनकी capacity build करनी पड़ेगी. ठीक है? मेरी बेटी के जो स्कूल में बच्चे friends हैं, they all work together. It's all normal. Nitya can't spell. She's very creative. That is my child. Uski best friend is very intelligent, very high vocabulary, can spell but is not creative. दोनों साथ में presentation करते हैं, धमाका हो जाता है. नित्या बोलती है कि you don't worry about the design, वो मैं देख लूंगी. यार तू अपना अंग्रेजी लगा. ये लड़की बोलती है तू अंग्रेजी स्पेलिंग वगैरह का मत बोल, तू डिजाइन कर. And they become a great team. आप ये कर सकते हो, या बोल सकते हो पेरेंट्स को कि यार ये बच्चा ना बहुत शैतानी है, पढ़ाई नहीं करता, इससे दूर रखो अपने बच्चों को. It is about how you sensitize and build capacity. But first step is to screen the child. It will help you identify what might be the problem, whether it is a learning loss or whether it's a learning disability. It will ensure that we can start interventions early, right? If we start interventions early, that means the learning gap will reduce. If the learning gap reduces, that means the child is not likely to drop out, right? And we will be able to believe in their strengths and struggles. So how do you do the identification? We went through the 3 triangles: academic,
एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस दोनों देखना पड़ेगा. इमोशनल वेलबींग, बिहेवियरल इंडिकेटर्स देखिए. ठीक है. और लेट मी सी, हमने वो, सो वी विल शेयर विथ यू आफ्टर दिस अ चेकलिस्ट. सो एकेडमिक में वो चेकलिस्ट क्या हो सकती है? स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है तो द वर्ड इनफ spells it different way. ENUFF, ENUF, ENOU, no, EN. So it could be spelling, it could be mirroring, it could be, reading slowly, whatever it is. We have to keep that in mind. And finally, once you are able to screen, now screening and identification is like this. जब हम लोग क्लासरूम में रहते हैं, आप ये समझिए, एक बच्चा ऐसे देख रहा है, मैम बहुत सर दुख रहा है मेरे को, क्लासरूम में वो बोर्ड पे आपने क्या लिखा ठीक से दिख नहीं रहा है. आप क्या सोचोगे? अगर आपके क्लास में ऐसा बच्चा है, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? आपको क्या लगता है ये बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्क्राइब किया? हु स्क्विंटिंग लाइक दिस एंड बोल रहा है मैम थोड़ा सा बड़ा लिखो, मेरे को बोर्ड पे दिख नहीं रहा है. आई प्रॉब्लम, यस, विजन, करेक्ट. आपको कैसे पता चला? आप डॉक्टर हो? आपके पास डॉक्टर की डिग्री है? नहीं ना. इट्स नॉर्मल, वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट, वी नो दिस इज अ सिम्टम. तो आप इस बच्चे को आई टेस्ट कराएंगे. सिमिलरली, स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, व्हेन वी गो बैक टू दिस ट्रायंगल, is our ability as teachers and parents to be able to say that okay, ये बच्चे में शायद लर्निंग डिसेबिलिटी है, बट हम डॉक्टर नहीं है, हमको फॉर्मल टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा. And for that, there is a medical process that has been laid out by the law. A pediatrician, a psychiatrist, or a neurologist will be able to see this. In that, the first is an initial assessment by the pediatrician. देख सकता है, no eyesight, no hearing, no physical problem. Second is IQ testing. Why IQ testing? Because these are individuals with average or above average intelligence. Very, very, very critical. This is not a slow learner like he appears to be. They are people with average, above average IQ. And once, only if they have IQ which is average, above average, then a test is done by a psychiatrist or a neurologist. Either officially government में निमहैंस बैटरी या GLAD2 यूज होता है, बट ये याद रखिएगा कि the tool must be in the primary language of the child. So you may be an English medium school, but बच्चा हिंदी में सोचता है, टेस्ट हिंदी में होना चाहिए. This is not a test for learning loss. It is a test for learning disability. So with this, I will now stop. We have about 5 minutes to take some questions. Tomorrow, we will cover how are you going to actually help them in the classroom. All of this is great, but I acknowledge that you all have 40 kids in your classroom often, and isko manage karna problem hota hai. It's not easier than you realize. So we'll talk about inclusive teaching strategies, what universal design is, what are different learning styles, how do you manage classrooms with children with diverse needs, what is this accommodation business, and how do I create inclusive assessments. So with this, I will stop. And if you all have any questions, please put it in your chat. Thank you, Nupur, so much. In a very easy and simplified way, आपने बहुत सारे क्लासरूम इंटरेक्शंस को टच किया एंड अपने पूरे प्रेजेंटेशन में आपने बहुत बार ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज भी बताए. आई एम श्योर आई वाज नोटिंग इट डाउन एंड सो वर द टीचर्स कि क्या ऐसा हम रिफ्लेक्ट कर सकते कि हाँ ऐसा भी होता होगा क्लासेस में. In this meanwhile, कुछ टीचर्स ने चैट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं. शायद कॉन्स्टेंटली चैट्स आ रहे हैं, इसी के लिए शायद आपके क्वेश्चन छिप सकते हैं. इसी के लिए आप प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर्स में ये अपने चैट्स डाल सकते हैं. In the meanwhile, I will just read out 2 questions that has come from Kalyani Sharma ma'am. And I would request others to put their questions on chat section. ज्ञान प्रकाश जी, आप प्लीज एक बार Q&A पे अपना क्वेश्चन डाल दें. Kalyani Sharma has written, an autistic child
in a foundational class, do's and don't. It's on you, Nupur, if we are dwelling on it, हम इसको बता सकते हैं, or you can just take this question also. I would say कि मैम, I'm not an expert in autism. मैं learning disability पे काम करती हूँ. But autism is a range. So you have to understand what type of autistic this child is. Non-verbal hai, is it a person who has emotional, social challenges? उस हिसाब से आपको treatment करना पड़ेगा. If we have some more details, we can always address it later. And we can connect you to the right person. Right. Reenu ma'am, आपका question था, is mirroring under learning disability? Does mirroring come under learning disability? Reenu Huda ma'am. So, ma'am, every child will do some form of mirroring up to age 8. This is why we try to do a formal diagnosis after age 8. The problem is when you start mirroring and continue mirroring beyond the development milestone. So, children will get confused with left and right even early years, right? So, it's about what happens after you are supposed to achieve that milestone. Also, remember, it's not just about mirroring. You could maybe mirror also because you are not a non-native speaker. आपकी वो भाषा ही नहीं है तो आप learning loss के वजह से भी mirror कर सकते हो. It is the triangle: academic, executive functioning, and emotional well-being. Again, everybody in their life, you, me, everyone has been in one of these corners at some point in their life. It's only when you are in continuously in all three that you see a child that they may be at risk. So we should not even overdiagnose or simplify it. But mirroring is the most common. Also, mirroring we think is always vertical. So DB ban gaya, but it can also be horizontal. So remember that as well. And mirroring can also be not individual letters but words. Okay? So NOT can become TON. उन्होंने पूरा word ही mirror कर दिया. So you have to keep that in mind as well. Mirroring shows different ways. Do we have any time for maybe one more question? There are many questions Okay, actually. so If let's we try can, and do a few more. yeah. If the student keeps on repeating any sentence loudly and write anything. This is from Richa Sharma, ma'am. Yeah. Ma'am, that's too vague. I can't give you a diagnosis answer on that. It could be for multiple reasons why the child is doing it. Yeah. Mr. Gyan Prakash has written, ma'am, how to build sensitivity in other students and teachers for learning disability children. देखिए, मैं एक बहन रही हूँ to a brother with a learning disability, and I am a mother to a child with a learning disability, a daughter, and I am a mother to a son with ADHD. जो मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत सीखा है is children imitate us. Instead of judging, we should accept everybody has different strengths and struggles. And if we accept that diversity truly, then children are able to accept much, much quicker than if we allow them to and start creating the divide. This is why inclusive schools are very, very important. If a child is being mocked, it needs to be stopped by the adult. But an adult should not be picking on the child either. So I think it's about the culture of acceptance that strengths and struggles go hand in hand. One person's strength may be another person's struggle. Acceptance that we complement each other and should work together, nevertheless work. It cannot be one of pity. And yaar, bichara, isko nahi aata hai, main iska bhala kar दूं. That will never be possible. It needs to be done as equals. So I would say that is one. Sensitization sessions, reinforcement of behavior, pulling up for bad behavior, maybe giving accommodations and, sort of recognizing good behavior helps. Creating sessions in which you have to work together forcefully, ensuring that the success of the team is only possible if the success of everyone was there. I think that also reinforces that culture. तो एक स्कूल है दिल्ली में where they do group work, and हम लोग हमेशा देखते हैं ना, स्मार्ट किड्स डू सारा काम एंड बाकी सब बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं.
तो ये स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड अगर सब बच्चों ने नहीं कंट्रीब्यूट किया इक्वली एंड प्रेजेंट किया, then then the group fails. So it's only when we all work together we pass. It's not about the actual outcome but the process taken. So that's another way to reinforce. I hope that answers your question. Yeah, I think in the interest of time हम 2 और questions लेंगे और बाकी questions हम देखते हैं कि हमारे आने वाले sessions में अगर वो cover होते हैं. Does it take 2 years to see improvement in a slow learner? Ravneet Kaur Sardar ma'am का question है. Ma'am, they are not slow learners. They are not slow learners. They don't suffer. They are not slow learners. They have IQs which are average or above average IQs. So we have to be very, very careful about this. The way a child will improve, there is no time frame. A child may improve immediately, may take 2 years. It depends on the learning loss and the gap, as well as how you do the interventions. We will talk about interventions in tomorrow's session. तो तब हम थोड़ा सा और कवर करेंगे उस बारे में. Sure. Harshita Bharadwaj ma'am ka question hai, there is a child in her class who's facing difficulty in understanding concepts in every subject, not able to cope up with the speed and accuracy. Class 1 student, have to push a lot, but even after that can't see any positive change. What can be done? Ma'am, check on the triangle. Is the child only academically struggling या दोनों other corners में भी struggle है? We will share Devashri ji with the attendees and today the checklist. I think that might help some of you all identify children. If we can send them out as a resource, I think it will be helpful. And then we can talk about why this child is struggling. There are multiple. We don't know whether the child is hungry, malnourished, not being able to study. Language का barrier है, learning loss है, या learning disability है. So I don't want to give quick diagnosis, but the checklist will help you see if there might be a learning disability. Sure. So I think the checklist आप सबको बहुत मदद करेगा, to answer few of your questions. But in the interest of time, हम आज यहीं पे question and answer को end कर रहे हैं. हम कल continue करेंगे. आपके सारे questions मैं नुपुर को भेज दूंगी and she can actually have a look कि किस तरीके से हम session के through इनको cover कर सके. I would just request all of you to give us take the feedback poll and let us know कि आपका session आज का session आपको कैसा लगा. Do rate us from 1 to 5 and also आज हमने बहुत सारी चीजें cover की है, but there is more that needs to be covered. बहुत vast है ये पूरा जो topic है. So please I will request all of you कि आप 5 बजे कल sharp login कर लें. And after a quick recap, हमें बहुत सारे नए टॉपिक्स को टच बेस करना है. तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, just be on time for tomorrow's session. Also, सर्टिफिकेट के लिए for people who have joined late, इस बार का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ये सारे रिकॉर्डेड सेशन जो है वो 27th को अपलोड हो जाएंगे, जिसके बाद एक असेसमेंट है. आप वो असेसमेंट क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो आप जो आपके अगर फ्रेंड्स एंड कलीग्स आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, प्लीज डू टेल देम टू ज्वाइन बैक फॉर टुमारोज एंड डे आफ्टर सेशन. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग and they can touch base on today's session as the recorded session will be available on the teacher app, and they can just avail the certificate. All right. Thank you so much, Devashri ji. And tomorrow we get more practical experience. We talk about more practical things कि आप ये classroom में कैसे implement करेंगे. ठीक है. All right. Hope to see you all tomorrow. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, everyone.